Good evening to all of you. Hello guys. Good evening all. Good evening to all of you. केमती अछंती आपण माने समस्ते केमती अछंती भलो अछंती की आर यू गुड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ओके तो स्टार्ट करिए हमें टॉपिक को so the topic what we are going to start is failure of bolted joint failure of bolted joints ठीक अच्छे माने बोल्टेड कनेक्शन जदि अच्छी देन से केमिति केमिति को टाइप रु से फेल ही पारे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग जदि बोल्टेड कनेक्शंस अच्छी तो से केमिति केमिति फेल ही पारे ओके सो अच्छा गुड न्यूज ये जो माइक एबे मु यूज करूची ओके आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर माइक तो से पर टिके जो जदि भी वॉइस रे टिके प्रॉब्लम आसुथुवा तो आसुथुवा तो मु आज ही गोटे नुआ माइक भी ऑर्डर कर देछि ओके तो से माइक भी संबलपुर ही आसीवार अछि उमर को जणा एठी ओके मु हमर भाई अछंती उमर ताली इ नो कुठ मु ऑर्डर करी तो ये माइक आसीबो स्पीड पोस्ट करिवे ताके गोटे 4 रु 5 दिन भितरे हमर नुआ माइक भी आसी जीवो तो से माइक को यूज करी तो वॉइस भी आउरी क्लैरिटी रे आसीबो ओके सो स्टार्ट करिवा सद्दाम भाई कितने दिनों के बाद मिले हो कहाँ है सद्दाम भाई हाउ आर यू फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट देन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज फेलियर ऑफ बोल्ट इन शियर फेलियर ऑफ बोल्ट इन शियर फेलियर ऑफ बोल्ट इन शियर एबे बोल्ट शियर रे फेल ही जाउची माने कोन लेट्स सपोज वी हैव ए प्लेट लाइक दिस आ ऊपर आ गुटे प्लेट को हमें रखिलु लैपिंग लाइक दिस एंड वी आर मेकिंग ए लैप जॉइंट तो ये फोर्स कैरी करियो P दिस विल कैरी ए फोर्स P अब ये जगह हमें बोल्ट प्रोवाइड करिछु ये जगह रे हमें ये बोल्ट प्रोवाइड करिछु वी हैव प्रोवाइडेड कनेक्शंस सो एट फ्रॉम हियर ये जो प्लेन अछि दिस इज द शियरिंग प्लेन दिस इज योर शियरिंग प्लेन तो ये जो एक्सियल लोड ये प्लेट को कैरी करियार अछि आज को जो शियर फोर्स ये प्लेन राशियो शियरिंग प्लेन रे इफ दैट पर्टिकुलर शियर फोर्स अप्लाइड शियर फोर्स ड्यू टू दिस फोर्सेस becomes greater than shear strength of bolt then bolt will fail दुई पार्ट रु कट हे जीवो सो दिस टाइप ऑफ फेलियर में अकर और जदी बोल्ट भांगी गला बोल्ट कट हे गला तो फेलियर हला ना नहीं तो ये टाइप ऑफ फेलियर केबे हबो इफ shear strength of bolt is less than applied shear due to loading applied shear due to loading तो शियर फेलियर ही पारे जाजू को पूरा कनेक्शंस फेल ही पारे
So this is your first type of connections. Note it down. उमर भाई संबलपुर आकर होछंती. गुड इवनिंग बिंदु जी, अमित भाई गुड इवनिंग, पवित्रा जी गुड इवनिंग, सदाम भाई गुड इवनिंग, सुभाषिष भाई गुड इवनिंग, all of you good evening. Complete. This is your first type of failure. Okay, shear failure. When applied load, अब एठी देखंतु ये केस रे हमें देखियो अप्लाइड शियर, तो ये केस रे ये जो फोर्स अछि दिस पर्टिकुलर फोर्स P इटा तो ये प्लेट पाइन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेट बुझंतु लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज सच दैट दिस पर्टिकुलर फोर्स इज एक्सियल फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेट. ये जो प्लेट अछि ये प्लेट पाई ये मेंबर पाई इट इज एक्सियल फोर्स बट दिस पर्टिकुलर फोर्स इज शियर फोर्स फॉर द bolt. So if shear strength of bolt is less than applied shear due to loading, applied shear due to loading will be nothing but P only. Getting the point? So for safe design, for safety, for no failure, shear strength of bolt, SS of bolt should be greater than applied load. In this particular case should be greater than applied load लिखम तो राजेश जी गुड इवनिंग. ये पॉइंट एठी हेबो ना हेबो नहीं बुझा वाला की गेटिंग द पॉइंट. shear failure रे कोन हबो बोल्ट टू पीसेस रे कन्वर्ट हे जीवो माने फ्रॉम shear प्लेन ये ऊपर वाला पीस गोटे अलगा तळ पीस अलगा गोटे देखा जाउथो. बोल्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू पीसेस. ठीक अछि when there will be shear failure of your bolt. Make this particular diagram complete. This is your first type of failure. वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गुडा को पचारिवे ये कांसेप्ट गुडा को बुझिवार अछि आपन को. हे गेला की लाइक कर दे भाई भौनी माने. 15 students watching, only 7 likes. Next बढ़िबा की कमेंट करी चलिए. नेक्स्ट बढ़िबी जीवा आगु को हे गोला. ओके second, bearing failure of bolt. Bearing failure of bolt. What is this bearing failure of bolt? Sudantu again. This is a plate. This is a plate. P force को ट्रांसमिट करियार अछि. P force is to be transmitted. ये जगह आपण कनेक्शन टा प्रोवाइड करि छलती. You have provided connection here. This is your bolt. एठी नट अछि. ठीक है, दिस इज योर नट. अच्छा नट टाइट रहियो ना भाई, नट को मु केमथि लूज कर दोची. एठी आपण नट प्रोवाइड करि छथि. यस और नॉट लाइक दिस. एबे सुनंतु ये जो प्लेट अछि तळा वाला प्लेट आ ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन रे एक्ट करूची ना. इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन द डाउन फोर्स इज एक्टिंग. तो ये जो तळ वाला प्लेट अछि
ये बोल्ट रो ये जो साइड अछि इन दिस पर्टिकुलर साइड ये पटे गोटे फोर्स लगेइबो इट इज अप्लाइंग ए फोर्स लाइक दिस ऊपर वाला प्लेट देखो तो बोल्ट को सेपटे नहीं कर जाउछ मींस इट इज अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस एमिति जदि फोर्स एक्ट करूची बोल्ट ऊपर तो ये बोल्ट को मधु बाहर को काढी कर नहीं कर आसुची देखंतु दिस इज द बोल्ट तो ये टाइप फोर्सेस एक्ट करबा जुगु कोन हेबो बोल्ट रो ये वाला पोर्शन आउ ये पटे ऊपर वाला रो ये पट पोर्शन टा मटेरियल गुडा को क्रश हे जीवो मटेरियल विल गेट क्रश्ड मटेरियल ऑफ बोल्ट will get crushed जदि मटेरियल क्रश हेबो देन दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज बियरिंग फेलियर माने मटेरियल झड़ी जीवो क्रश हे कोटे झड़ी जीवो माने ये लेंथ रे मटेरियल कट हे जीवो ओके क्रश हे कोरी कट हे कोरी झड़ी जीवो मींस बोल्ट विल बिकम लूज आ तार जो पर्पस थिला कनेक्शन को टाइट रखियार से पर्पस ता से फुलफिल करि परिबोनी एंड द जॉइंट विल फेल बोल्ट विल बिकम लूज ये जिनसोटा जनरली केबे हुए व्हेन दिस थिंग इज हैपनिंग ये जिनसोटा केबे हुए व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैपनिंग देखो तो एठी दुईटा जिंस अछि गोटे बोल्ट अछि गोटे प्लेट अछि प्लेट ऊपर फोर्स एक्ट करूची बोल्ट को से फोर्स ट्रांसमिट करियार अछि गोटे प्लेट रो अलगा प्लेट रे तो ये जिनसोटा बेसिकली बियरिंग फेलियर सतबेले हेबो बियरिंग फेलियर बेसिकली सतबेले हेबो व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज ओके स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मटेरियल एमति लखंतु व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मटेरियल इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट मटेरियल strength of bolt material is less than strength of plate material at that time this type of failure may occur okay generally ordinary bolt or black bolt रे bearing failure आपण देखि परिबे को टाइप बोल्ट रे ordinary bolt और आकु ही हमें ब्लैक बोल्ट कहूछु ब्लैक बोल्ट्स in ordinary bolts or black bolts bearing failure may be observed bearing failure may be observed complete it टूटेगा गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मॉर्निंग परे चाहिए भी पढ़ी होनी हाउ टू मैनेज सर आई वांट जॉब सेल्फ मोटिवेटेड रुहंतु चेष्टा करंतु भाई सेतिकी ही कहबी
गुड इवनिंग असीमा जी। तो गोटे जॉइंट केमती फेल हो पारिबो आमे टॉपिक स्टार्ट करिथिलु कोन फेलियर ऑफ वोल्टेज जॉइंट। तो वोल्टेज जॉइंट रे बोल्ट गुडा अछि तो बोल्ट रो फेलियर जो जॉइंट फेल हो पारे बोल्ट शियर रे फेल हो पारे और इन बियरिंग फेल हो पारे। ओके शियर रे फेल हो पारे और इन बियरिंग आइ रे भी आ गोटे पॉइंट लिखि पारियो कि दी अप्लाइड लोडिंग मस्ट बी लेस देन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये पॉइंट में लिखि पारिबा फॉर नो फेलियर applied loading must be less than bearing strength of bolt. Less than bearing strength of bolt. Bearing strength of bolt for safety. Yes or not? ये पॉइंट हमें लिखी परिवा। अच्छा मैरिज पर है अरे मैरिज पर पढ़िया होगी। हेबो बट अपन को लाइफ पार्टनर को बुझेबार अच्छी कि आई नीड माय प्राइवेट टाइम इन एजुकेशन ये टाइप तापरे फैमिली खर्च ये सब भी उठेबा पय काम भी करिया पड़िबो टिके टफ हो जाउची। बट whatever the situation if you want then you have to do it just एतिकी मन रखंतु आउ कोन करिवि। I am also married but हेले भी सब जिंस देखिया को पडुची ना क्लासेस भी करूची निज वर्क लाइफ भी मैनेज करूची एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई एम आल्सो डूइंग। ओके तो इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट डू इट। ओके से हिसाब रे जो भी इनपुट दरकार सेटा दबा को ही पड़ियो। वेल देखंतु सुनंतु तो बोल्ट केमती फेल हो पारे शियर रे फेल हो पारे बियरिंग रे फेल हो पारे। जदि बोल्ट फेल होइला ताहेले भी कनेक्शन फेल हो दियो। आउ गोटे ऑप्शन कोन अछि ये बोल्ट गुडा को का को कनेक्ट करूची ये बोल्ट गुडा को प्लेट्स को कनेक्ट करूची जदि आइ रे प्लेट्स फेल हो गेला ताहेले भी कनेक्शन फेल हो पारे। सो एबे हमें देखियो फेलियर ऑफ प्लेट्स। So this is the failure of connection due to failure of bolt in shearing or bearing. Now the connection may fail due to failure of plate. Failure of plate केमती केमती आसुची देखिबा। Failure of plate. Failure of plate. सुनंतु जस्ट अ मिनट। अरे भाई सॉरी गाइस sorry guys sorry failure of plates. First tearing failure of plate tearing failure of plate tearing failure of plate केबे हेबो देखंतु। Let's suppose this is a plate. Okay आ गोटे प्लेट को कनेक्ट करूछंती एमिति ठीक अछि।
ये फोर्स पी ट्रांसमिट करियार अछि क्लियर आपण कौन करिले ना वोल्टेज कनेक्शन करियार अछि आपण भाबिले गुरु एटी बोल्ट मारिवार अछि भल से कनेक्शन बने दबा गोटे दुटा बोल्ट कोन पाई कनेक्शन भांगिबो नाही बहुत गुडा को बोल्ट बने दबा एमिति 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 आपण बहुत गुडा को बोल्ट प्रोवाइड कर देले एठी आ ये प्रोवाइड करिया जो कोन हैला प्रॉब्लम कोन हे गेला प्रॉब्लम इज जो मिनिमम पिच अपन को मेंटेन करिया थिला ना मिनिमम पिच ओके जो मिनिमम पिच मेंटेन करिया थिला मिनिमम पिच कहते 2.5 टाइम्स डी ये डिस्टेंस रू भी कम डिस्टेंस रे बोल्ट मारी दी छंती कौन करिले बहुत गुडा को होल कर देले ना बहुत गुडा को होल कर देले एबे से बहुत गुडा को होल करिया जुगु कौन पाई मिनिमम पिच हमें मेंटेन करिनु ठीक अछि एंड मिनिमम पिच मेंटेन न करिया जुगु बहुत गुडा को होल आपण प्रोवाइड कर देले बोल्ट टाइट करिया पाई तो ये जो प्लेट अछि ये फोर्स को कौन कैरी करियो ये बहुत गुडा को होल हे जिवा जुगु ये मझिरु आपे आपे भांगी जियो it will break this is a type of tearing failure it will break from here बहुत गुडा को होल आपण प्रोवाइड कर दै छंती तो अति लालच बुरी बात ओके जति के दरकार नट बोल्ट सेट की टाइट करंतु भाई बहुत गुडा कोन पे दे देले बेकार हो ना ठीक अछि दिस इज वन एग्जांपल ऑफ टीयरिंग फेलियर ठीक अछि जते बेटे ये प्रॉब्लम केबे हेबो व्हेन you have not maintained minimum pitch and provided more number of bolt holes provided more number of bolt hole ओके टीयरिंग फेलियर रो आकु ये भी गोटे टीयरिंग फेलियर रो एग्जांपल टीयरिंग फेलियर रे आ गोटे भी आसुची ताको हमें देखिबा फर्स्ट राइट डाउन अप टू हियर so to avoid this type of failure minimum pitch should be maintained okay to avoid this type of failure minimum pitch should be maintained yes or not एमती लिखि परिबा to avoid this type of failure minimum pitch should be maintained should be maintained okay write it down देखंतु जो भाई पचारथिले मैरिज परे सर पढ़ी होनी तांको पय गोटे मु कोची गोटे मोटिवेशन लास्ट टाइम जो सिलेक्शंस ही थिला ना मोर ही कोचिंग रु आमर ही क्लासरूम प्रोग्राम रु जो भाई भौनी माने सिलेक्टेड हेथिले जने आसीथिले एबे तो देखंतु जने आसीथिले सागरिका महांती गोटे दिन आमे लाइन रे थिलु ऑनलाइन पढुथुलु आसीथिले एबे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जेई अछंती तो सी इज फ्रॉम मुनिगुडा तो तांकर लाइफ देखंतु तांके तांकर माने आउरी बे भौनी माने समस्त पढुछंती ही एबे लाइव रे अछंती ही ओके लाइव रे अछंती मु ना कोइबिनी लाइव रे अछंती भौनी माने पढुछंती बट से तांके सिलेक्टेड हेले बोली तांकर मु कहूची तांकर किड अछि दुई दुईटा सेटा भी 6 वर्ष 7 वर्ष ये एज रो किड माने अछंती माने भवंतु कि आउ घर देखिबार अछि सब दिन स्कूल जीवा पिला माना सब मेंटेन करिवाटा
after doing that much activity she used to study. अब हम classes रो तो जानू छंती yes or not, then also she used to study, practice question, yes or not, and finally she got selected in water resource department under general category. तो केते पिच डिस्टेंस, अरे सुनंतु देखंतु ये केस रे अच्छा एठी मिनिमम पिच और मिनिमम गेज, यस और नॉट, मिनिमम गेज माने ताकू ओके मिनिमम पिच और गेज एमति लिखि दियंतु, मिनिमम पिच और गेज स्लैश कर दियो। जदि ये टाइप ये लेंथ रे आपण प्रोवाइड कर दै छंती बहुत गुडा को होल अलोंग लेंथ, तो एमति ब्रेक हे जिवो। ओके सो पढ़ी हेबो, मन रखि दिबे, यू हैव टू स्टडी एनी हाउ। जदि किछि चाहू छंती देन तापा एक्टिविटीज करिवे, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। बिल्कुल सो नेक्स्ट पेज हेगला हे जाइथिबो। नेक्स्ट इटा टीयरिंग फेलियर रो केस 1 थिला, आउट ए केस कोन हे पारे टीयरिंग फेलियर रो देखम केस 2, टीयरिंग फेलियर केस रे ही केस 2 प्लेट्स ये दुईटा प्लेट को आपन को कनेक्ट करिया छला, लेट्स सपोज तो आपन कोन करिले, व्हाट यू हैव डन, लेट्स सपोज ये केस रे आपन कहिले कि सर बहुत होल कर दवा जो से प्लेट भांगी जाइथिला, ये थरा मु भल से प्रोवाइड करिवि, माने बेसी होल प्रोवाइड करिवि नै, मु दुईटा का होल प्रोवाइड करली, एतिकी मोर आसला सफिशिएंट, दुईटा प्रोवाइड करली। लेट्स सपोज ये पी फोर्स कैरी करिया अछि आपको, it has to transmit p force, तो एटा होची अप्लाइड लोडिंग। एबे ये केस रे हमें कोन करिया ना, देखंतु ये जो क्रॉस सेक्शन अछि एकदम ये बोल्ट रो एकदम सेंटर रे, गोटे मिनट एकदम ये सेंटर रो ये जो क्रॉस सेक्शन वो पाई भी ना, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज नेट सेक्शन। Now what I will calculate at this particular net section, I will calculate tensile load carrying capacity of the plate, tensile load carrying capacity of plate, tensile load carrying capacity of the plate at net section केमती कैलकुलेट हवा, 0.9 into area net into permissible stress। so net section में जते बडा आपण tensile load carrying capacity कैलकुलेट करिवे, the permissible stress will be based on what, ultimate stress value fu। so when the permissible stresses are based on ultimate stress value, what is the partial factor of safety जो हमें कंसीडर करू छु फॉर लोडिंग, केते तार वैल्यू केते, कमेंट करंतु, काकू भी मन अछि ना मन नाही। what is the partial factor of safety, केते यूज करिया, 1.1 ना 1.25 ना 1.5, based on ultimate stress what is the partial factor of safety,
फर्स्ट क्लास रे बतैथिली स्टील रो केते गुरु वेरी गुड 1.25 सो इटा तो हमें टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट कैलकुलेट करिछु ओके तो लाइक दिस यू विल कैलकुलेट द टेंशन लोड कैरिंग कैपेसिटी एट द नेट सेक्शन ठीक अछि नेट सेक्शन रे टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी एमती कैलकुलेट हेबो जदी मु कहिबी ये सेक्शन रे एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन आपण ये प्लेट रो लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करंतु देन दिस इज द ग्रॉस सेक्शन तो ग्रॉस सेक्शन रे जतबे हम लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करिवा इट विल बी एरिया ग्रॉस into permissible stress. What is permissible stress in this particular case? It will based on yield stress Fy divided by 1.1. तो ये जो वैल्यू टा आछिबो ना एटा ऑब्वियसली ये वैल्यू रो बड़ ही रहउची ओके तो आम पाखरे एठी जो क्रिटिकल सेक्शन हमको देखा जाउची corresponding to this particular force transmission is your net section ठीक अच्छी तो ये जो फोर्स अच्छी दिस पर्टिकुलर फोर्स जो हमें अप्लाई करूछु दिस पर्टिकुलर फोर्स मस्ट बी less than this particular force that is tensile load carrying capacity of the plate at net section. If this particular force become greater than that particular force, then the plate will break. Yes or not? Then also the plate will break. So it is a case 2. This type of failure is also called as tearing failure. Tearing failure और टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट आपको हमें टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट भी कहिबा टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट अब देखंतु ये जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया रे हमें ये प्लेट रो लोड कैरिंग कैपेसिटी और ये मेंबर रो लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करिलु दिस इज नथिंग बट योर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर यस और नॉट maximum load carrying capacity of the member yes or not अब देखंतु ये नेट क्रॉस सेक्शन एरिया में केमती कैलकुलेट करिवा हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर नेट क्रॉस सेक्शन एरिया लेट्स सपोज ये नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट करिया रो मु आपन को टेक्निक बताउची देखंतु एठी को गुड थिकनेस लेट्स सपोज ये प्लेट ऑफ सेम थिकनेस ओके एज्यूम इट हैज द सेम थिकनेस t दिस इज आल्सो ऑफ थिकनेस t तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी विड्थ ये विड्थ लेट्स सपोज ये विड्थ होची b ये डायमीटर ऑफ होल इज d नॉट दिस इज आल्सो d नॉट तो एरिया net is equal to b minus 2 times d naught into thickness t और जदि मिनिमम माने को गुटे प्लेट मोटा अछि को गुटे थिन अछि देन टेक थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट ओके लाइक दिस यू विल कैलकुलेट द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया तो 0.9 into area net into fu divided by 1.25 जदि ये तीनटा बोल्ट होल रही थांदा देन b minus 3 times d naught into t like this you have to do clear तो एठी हम लिखि परिबा गुड पॉइंट when applied load is more than tension carrying capacity at the net section tension carrying capacity at net section this type of failure may occur this type of failure may occur
Okay, we can write like this also. ठीक अच्छी, complete it. भांगी जीव, it will get converted into two pieces. लाइक कर देबे क्लासेस, वेरी गुड, समस्त आंसर देले, वेरी गुड, समस्त को मन अच्छी। कि completed, completed. हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, splitting failure of plate, splitting failure of plate, इटा केबे हेबो सुनंतु, लेट्स सपोज दिस इज द प्लेट, force P is to be carried, आ तोड़े भी किसी गोटे प्लेट अच्छी, लेट्स सपोज आ तोड़े भी प्लेट अच्छी, ओके एमिति एमिति प्लेट अच्छी, एटा कनेक्ट हेबार अच्छी, ओके। एबे आपण जो बोल्ट प्रोवाइड करी जंती ना, ये जो ऊपर वाला प्लेट अच्छी आप एकदम एकदम साइड रे, एकदम साइड रे, एकदम किनारा रे, एठी एकदम बोल्ट होले पाखरे एकदम प्रोवाइड कर देले, एकदम एज रे। एबे ये फोर्स जुगु ये कौन है भाई, ये बोल्ट रे, ये जो प्लेट रो ये जो पोर्शन अच्छी ना, ये एति की ये पोर्शन टा सेटा कट हे जिवो, गेटिंग द पॉइंट। सुनंतु गोटे मिनिट, आकु मु आउ थरे बनौछि नले से पई ये साइड वाला प्लेट मु देखौ नथली, बुझंतु। देखंतु एमिति अछि, आपण बोल्ट ना एकदम ये आज जो एंड अच्छी ये प्लेट रो, ये एंड रू एकदम एकदम पाखरे बोल्ट होल करी देले, ठीक अच्छी। तो ये जो पोर्शन अच्छी, ये जो पोर्शन एमिति एतिकी, ठीक अच्छी, ये प्लेट रो एतिकी पोर्शन स्प्लिट हे जिवो, कट हे जिवो, दिस विल ब्रेक। तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ ओके, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, माने ये पोर्शन टा उड़ी जीवो, कट हे जीवो। सो टू अवॉइड दिस minimum
end distance provision to be satisfied. ठीक अच्छे, that is E equal to 1.5 times D naught. मिनिमम एतिकी एंड डिस्टेंस तो आपन को प्रोवाइड करिया की पड़ी. जदि मिनिमम एंड डिस्टेंस आपन मेंटेन करी नांती आउरी बोल्ट को बहुत एंड रो बहुत क्लोज रे प्रोवाइड कर दै छंती, देन that end portion of the plate may split off from the overall part. Okay, ये पूरा प्लेट रो से end portion ता खाली split करी जियो. This is the case. Okay, splitting failure of plate. मन रखिथिबे. Next आई रे लिखुची आउट टाइप ऑफ फेलियर अछि. ये टाइप रो ही मिक्स अप इक्वल टिके चलीबो, बट तारो ना एबे मु एठी बतै दउची, बट ताको हम बेसिकली पढिबा इन टेंशन मेंबर डिजाइन. And that type of failure is called as block shear failure. Block shear failure. Okay. So block shear failure is also basically failure of plate only. Block shear failure. Block shear. एठी जो स्प्लिटिंग फेलियर होची, ये छोटो पोर्शन प्लेट रो बहुत छोटो पोर्शन टा पूरा प्लेट रो अलगा ही जाउची. बट ब्लॉक शियर पोर्शन रे जो कनेक्शंस आपण बनै थिबे से पूरा कनेक्शंस रो गुटे ब्लॉक ही फेल हे जिवो. केमते देखंतु block shear failure. Block shear failure. Block shear failure और आपको हमें जनरली shear failure भी कहूँ, और in general shear failure. आपको हमें डिटेल रे देखियो ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करियो ऑफ ए कनेक्शन इन टेंशन मेंबर. ओके, सुनंतु. लेट्स सपोज वी हैव ए प्लेट. दिस इज ए प्लेट. एटी लोड एक्ट करूची पी एमटी. ता साइड रे भी प्लेट थिबो, भीतर भी प्लेट थिबो. नाउ लेट्स सपोज आपण कनेक्शंस एटी प्रोवाइड करी छंती. सो ये टाइप किछि कनेक्शंस आपण एटी प्रोवाइड करी छंती. ठीक अछि. एमती एमती ये कनेक्शंस प्रोवाइड करथिल. लेट्स सपोज एटी एमती एमती किछि कनेक्शंस प्रोवाइड करी छंती. लेट्स सपोज लाइक दिस यू हैव प्रोवाइडेड कनेक्शंस. एमती ये बोल्ट गुडा को आपण कनेक्ट करी छंती. देन व्हाट विल हैपन इज, सुनंतु, ये पूरा एमती जो मु बनैली ना एबे ये लाइन टा जो देली, ये पूरा पोर्शन टा ओके गोटे जगह रही जीवो. आ ये फोर्स पी जो ये पूरा प्लेट बाहर को आसी जीवो. एंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन विल रिमेन देयर. माने ये जो प्लेट अछि देखंतु अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन शियर ही गला, यार शियर फेलियर ही गला. और एठी अलोंग दिस वर्टिकल लाइन एठी कोन हिला टेंशन फेलियर ही गला. means along one plane it is shearing, gote plane along shear failure he jibo, gote plane along tension failure he jibo. तो मन रखिथिबे a block shear failure is a type of failure in which generally two types of failure are combined. One is shear and tension failure. ठीक अछि. अब ये केस रहबो कोन, हमें block shear strength कैलकुलेट करिवा. जदि ये applied force is more than block shear strength of this particular connection, then that connection will fail. If the applied force is less than block shear strength, then it will be safe. ठीक अछि. How to calculate block shear strength इटा हमें देखिवा in tension member design. सेठी ही ये टॉपिक टा बुझा जिवो. एबे बिल्कुल बुझा जिवो ना, because you need more idea about that. से आइडिया गुडा को टेंशन मेंबर स्टार्ट होला परे ही हमें सिखिवा. ठीक अछि. नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ता सब कांसेप्ट हमहु सिखिवार अछि. तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज योर ब्लॉक शियर फेलियर. मन रखि दिबे. ओके, तो मु बतैबी आउ गोटे फेलियर कोन ही पारे. नेक्स्ट एठी लिखि दउची, सुनंतु. नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर, ये दुइटा सरीला. नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर इज योर bearing failure of plate. bearing failure of
bearing failure of plate. एबे देखंतु जते बेले मो bearing failure of bolt आपन को बताउथली, when I was talking about bearing failure of bolt, तो सते बेले मु आपन को कोन बतैली in bearing failure of bolt कि bolt रो material रो strength plate रो material रो strength रो कम अछि, hence bolt crush हेला. लेट्स सपोज तार उल्टा जदी हेला कि बोल्ट रो मटेरियल रो स्ट्रेंथ प्लेट रो मटेरियल रो स्ट्रेंथ रू बेसी हे गेला, देन ये केस रे कोन बोल्ट प्लेट को डैमेज कर दबो, तो जो प्लेट रो जाय रे होल करी छथि तार साइड गुडा को डैमेज हे जीवो. ओके माने लेट्स सपोज दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट और ये जगह रे हम बोल्ट होल प्रोवाइड करी छु, ठीक अछि. आ जदी बोल्ट रो स्ट्रेंथ बेसी अछि, इफ और ये टाइप किसी लोडिंग आपको कैरी करियार अछि, लेट्स सपोज दिस टाइप ऑफ लोड इज समथिंग इज टू बी कैरीड, तो बोल्ट ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेबो, मींस ये प्लेट रो ये सब जो माने प्लेट रो ये सब जो डायरेक्शंस गुडा को अछि इडा दिस पोर्शन प्लेट विल गेट डैमेज्ड. ओके दिस पोर्शन ऑफ प्लेट विल गेट डैमेज्ड हियर, प्लेट विल गेट डैमेज्ड. और जब प्लेट डैमेज हो गला, then that is also failure of this particular connection ना. okay that is also failure of this particular connections. ठीक अछि. तो ये जनरली केते बेले हेबो when you are using thinner plate. okay when we use thinner plate रो थिकनेस बहुत कम अछि, thinner plate केस रे ठीक अछि. तापरे कोन the strength material strength of plate is less than material strength of bolt. से पॉइंट गुटे लिखि परिबा material strength of plate is less than material strength of bolt. Material strength of bolt complete it. लाइक कर देवे भाई भौनी माने. So this is your okay this is your failure of your voltage joints. ये टाइप voltage joints फेल ही पारे, ठीक अछि. ये टाइप voltage joints फेल ही पारे. so मौसी वाला well okay guys, अब कौन करिया okay guys, then tata bye bye. With this we have completed this.
देह कुआडू भल हेबो भाई ना गोटे काम करिवा सुनंतु आ गोटे जिनस आ गोटे कैलकुलेशन करे दउची तापरे क्लास फिनिश करिवा मते भल लागुनी आधा घंटा आ देखि नबा सुनंतु वेल्डेड एक्सेंट्रिक कनेक्शंस रो ठीक अछि एक्सेंट्रिक कनेक्शंस भितरे ये डेरिवेशन बुझिबे ओके ये डेरिवेशन बुझिबे वेल्डेड कनेक्शंस in plane eccentricity ये वाला क्वेश्चन आसीओ माने टॉर्सन वाला केसटा ओके टॉर्सन वाला केसटा व्हिच केस टॉर्सन वाला केस सुनंतु देखंतु let's suppose कि we have a I section this is a I section ठीक अछि ये I sections रो आ गुटे प्लेट आपन को कनेक्ट करियार अछि एठी आपन लोडिंग अप्लाइड अछि तो ये जो कनेक्शन है हमें बनेवा आई एम गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर कनेक्शंस बाय यूजिंग वेल्डिंग लेट्स सपोज मु एठी वेल्डिंग कर दैछि आ तळे भी वेल्डिंग कर दैछि एमिति फिलेट वेल्डिंग को टाइप वेल्डिंग हेतियो फिलेट वेल्डिंग लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर लेंथ इज योर डी दिस पर्टिकुलर लेंथ इज योर ए ये तळ वाला भी लेंथ आउची ए ठीक अछि दिस इज योर आई सेक्शन फ्लेंज ऑफ आई सेक्शन रो जो फ्लेंज अछि से फ्लेंज रो गोटे प्लेट आपण एमिति वेल्ड करि जंती आ ये जगह रे लोडिंग अप्लाइड हबो दैट पर्टिकुलर लोड इज योर पी so this particular p load is acting at some eccentricity from the cg of the connection or not तो आपको जदि ये लोड को हमें cg of connection रे ट्रांसफर करिवा then what will get transfer गोटे तो डायरेक्ट shear force आसीबो and one torsion will be coming and torsional moment will be coming तो torsional moment वाला जो कंडीशंस होती ताको हमें कहवा इन प्लेन एक्सेंट्रिसिटी क्वेश्चन गुडे करैथिली थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दुइटा करैथिली ठीक अछि मन रखिथिबे इन प्लेन एक्सेंट्रिसिटी वाला केस एटा तो आइरे मेन क्वेश्चन कोन आसे देखंतु व्हिच सेक्शन इज योर क्रिटिकल सेक्शन आपण कहिबे सर आपण कहि चंती हमकु दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द लोडिंग तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द लोडिंग दिस सेक्शन इज क्रिटिकल सेक्शन ओके तो ये सेक्शन भी एटी भी इटा भी बहुत क्लोज ना लोडिंग रो इटा भी क्रिटिकल है पर ये ऊपर दुईटा सो एट क्रिटिकल सेक्शन वी नीड टू फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड हमको क्वेश्चन बेसिकली कोन आसे एट्रू साइज ऑफ वेल्ड हमको कैलकुलेट करिया पय ताके पचारंती ओके साइज ऑफ वेल्डिंग एट क्रिटिकल सेक्शंस साइज ऑफ वेल्ड ठीक अछि ये जो फिलेट वेल्ड अछि फिलेट वेल्ड रो को साइज मु यूज करबी हियर ओके दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स ठीक अछि सुनंतु देखंतु व्हाट साइज आई मस्ट यूज ओके व्हाट साइज आई मस्ट यूज सुनिबे ये जो फिलेट वेल्ड अछि आरो एनालिसिस मु स्टार्ट करूची आरो फोर्स कैरिंग कैपेसिटी फिलेट वेल्ड ऊपर बेसिकली शियर फोर्स आसीबो तो व्हाट इज योर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी
force carrying capacity cross section area into permissible stress cross section area equal to K into S into L effective into permissible stress कौन F ultimate divided by 1.25 आउ CA जदि अच्छी तो √3 तो दिस इज योर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी ठीक अच्छे दिस इज योर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी एबे सुनंतु ये एनालिसिस करिया पाई ना हमें कौन करवा ये एठी थ्योरी मु आपन को बुझाइबी ये जो वेल्डिंग करा जाय छी ना आको हमें गोटे रेक्टेंगुलर फॉर्म रे एज्यूम करवा देखंतु केमती एज्यूम करवा सुनंतु फर्स्ट राइट डाउन अप टू हियर फर्स्ट कंप्लीट अप टू हियर first complete up to here say size of weld ase okay interesting concept of शिवाती जी गुड इवनिंग केमती अछंती कंप्लीट करी कमेंट करंतु करदवा जी करदवा टेंशन नहीं करदवा डोंट वरी अच्छा ये डिस्टेंस एटी शो करी देबे लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए ट्रू नहीं लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज योर L ये फोर्स जाए ओके दैट डिस्टेंस इज योर L डायग्राम कंप्लीट करंतु बढ़िया मजा लगियो ये जो क्रिटिकल सेक्शन अच्छी जो क्रिटिकल सेक्शन देखेली क्रिटिकल सेक्शन माने कौन दैट पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द लोडिंग सब बड़े मन रखी दिबे क्रिटिकल सेक्शन इज योर दैट पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज वेरी क्लोज टू द लोडिंग ओके क्रिटिकल सेक्शन इज दैट पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच इज वेरी क्लोज टू लोडिंग लिखिबार अछि तो लिखि नियंतु आ गुटे पॉइंट लिखिबे तो लिखंतु critical sections are generally those sections over which the resultant stresses are maximum critical sections are generally those sections over which the resultant stresses are maximum critical sections are those sections over which resultant stresses are maximum okay critical sections are generally those sections which is very close to the loading okay ठीक अछि ओ भाई देखंतु एठी जो वेल्डिंग अछि along this length vertical माने longitudinal weld transverse weld let's suppose this is your longitudinal weld ऊपर वाला this is your longitudinal weld तळ वाला and this is your transverse welding this is your transverse welding एबे से जो वेल्डिंग अछि ना ताकू मु एज ए रेक्टेंगुलर पोर्शन कंसीडर करिली से जो वेल्डिंग अछि ताकू मु रेक्टेंगुलर कंसीडर करिली आ ये जो रेक्टेंगल कंसीडर करिली आरो ये जो थिकनेस आपण देखिबे व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिकनेस लेट्स सपोज दिस इज योर T and this particular thickness is K into size of the weld सब जगह रे K into size of the weld I am assuming like this ये जो K into S अछि आकू मु थिकनेस T कंसीडर करू छी ए यूनिफॉर्म थिकनेस ठीक अछि
तो मु आपको एमिति शो करि परिबे आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस नाउ ये जो कनेक्शंस अछि ये जो कनेक्शंस आपण देखुछन ये जो वेल्डेड एबे कनेक्शंस बनेली आर y एक्सिस किछि गुटे थिबो गुटे मिनिट सुनंतु भल से देखंतु ये कनेक्शन रो y एक्सिस अछि ये कनेक्शंस रो x एक्सिस भी हमें देखि परिबा okay let's suppose this is your x axis of the connection this is your y axis of the connection cg of the connection कोठी आसिला this is the cg ठीक अछि एबे सुनंतु ये जो हमें रेक्टेंगुलर वेल्डेड पोर्शंस गुडा को कंसीडर करिलु आंकर निज x एक्सिस गुडा को देखंतु इडा गुडे एक्सिस तापरे एठी गुटे एक्सिस आपण पाइबे y एक्सिस ठीक अछि एबे देखंतु this is the x and y axis of overall CG माने ओवरऑल कनेक्शन तापर एठी देखंतु ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन अछि तारो x एक्सिस होती निजरो सीधा तळ वाला निजरो ये रेड वाला तारो निजरो x एक्सिस y एक्सिस इज कॉमन फॉर बोथ ये केस रे इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेल्डिंग x एक्सिस टा कॉमन हे जाउची y एक्सिस एंड आर निजरो अलगा अछि ओके एबे सुनंतु दिस पर्टिकुलर लेंथ ये लेंथ केते थिला a एठी लेंथ केते थिला a ये लेंथ ता केते थिला d ठीक अछि लाइक दिस ना ना कन्वेंशनल क्वेश्चन मु करबिनी ओके सुनंतु तापर एबे देखंतु क्रिटिकल सेक्शन कोटा ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज योर क्रिटिकल सेक्शन तो क्रिटिकल सेक्शन रे ही हमको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करियार अछि एटी रिजल्टेंट फोर्सेस को जुगो आछियो गोटे आछियो ड्यू टू डायरेक्ट शियर आ गोटे फोर्स आछियो ड्यू टू टॉर्सनल शियर तो लेट्स सपोज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट क्रिटिकल सेक्शन इज this particular radial distance is your r that is your radial distance of the critical section which is your r एबे सुनंतु now let's suppose I need to find CG of the cross section ये cross section और CG कोठी लाई करूची let's suppose this is the CG of the cross section let's suppose CG of the cross section is lying at x bar from this particular axis let's suppose this is your y1 axis ये y1 axis रो at x bar distance CG टा लाई करूची तो ये x bar मु केमती फाइंड आउट करिवि let's suppose this is your area 1 this is your area 2 this is your area 3 so how to find that particular x bar x bar calculation that is CG of the section देखंतु CG of section by using parallel axis theorem I can write x bar into total area is equal to a1 x1
plus A2x2 plus A3x3. So x bar is equal to A1x1 plus A2x2 plus A3x3 divided by total area A1 plus A2 plus A3. A1 आपण को जाना A into T, A2 आपण को जाना A into T. Okay, एठी with thickness T, here also the thickness of the weld is T. A3 अपन को जाना D into T. तो A1, A2, A3 is known to us. अब X1, what will be the X1? What will be the कुत्ते मिनट शुणु A1 आकु आमे कहूछु, A2 आकु आमे कहूछु, A3 आकु आमे कहूछु, ठीक अछि। तो A1 is equal to A1 is equal to A2 which is equal to A into T, A3 is equal to D into T, X1 equal to X2 हेबो, equal to केते हेबो ग्रुप X1 equal to X2 will be equal to देखो X1 और X2 माने कौन? X1 and X2 is what? X1 and X2 is nothing but ये एक्सिस, ये y एक्सिस रो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करियार छी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सिस, ठीक अछि। माने सुनंतु ये जो एरिया A1 अछि, ये A1 एरिया रो y एक्सिस टा कोन? एरिया A1 रो y एक्सिस इज दिस पर्टिकुलर एक्सिस, ओके। एरिया 1 रो y एक्सिस इज दिस पर्टिकुलर एक्सिस। नाउ एरिया 1 रो y एक्सिस केते डिस्टेंस रो अछि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर y1 एक्सिस? फ्रॉम y1 एक्सिस एरिया 1 रो y एक्सिस केते डिस्टेंस रो अछि? जेते डिस्टेंस रो एरिया 1 रो y एक्सिस, ओके, फ्रॉम y1 एक्सिस अछि सेते डिस्टेंस रे एरिया 2 रो y एक्सिस अछि, ओके, सेते डिस्टेंस रो अछि। देन व्हाट पर्टिकुलर डिस्टेंस इट विल बी? This is this particular distance, and what is this particular distance? T by 2 plus A by 2. देखो तो T by 2 plus A by 2 हेबो, T by 2 plus A by 2 it will be चेक करंतु हेबो। So x1 equal to x2 equal to T by 2 plus A by 2, ओके, T by 2 plus A by 2 एमिति, ठीक अछि। माने से एक्सिस रो डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर y1 एक्सिस केते, क्लियर, ओके। से जिंसटा हम देखिलु माने एरिया 1 रो y एक्सिस कोठी अछि, एरिया 2 रो y एक्सिस कोठी अछि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर y1 एक्सिस, ये जिंसटा हम देखिलु, ओके। एबे ये एरिया 3 रो y1 एक्सिस कोठी अछि, दैट इज द रेफरेंस ओनली ना, सीधा तो हम रेफरेंस ही कंसीडर करूछु। तो x3 will be equal to 0, x3 equal to 0, x3 is equal to 0। एबे वैल्यूज बड़ा को पुट करंतु, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ओके।
ये वैल्यूज गुडा को पुट करंतु substitute the values जतबे वैल्यूज गुडा को हम सब्स्टिट्यूट करिवा देन व्हाट वी विल गेट x bar equal to a into t into a by 2 plus t by 2 by into 2 plus a into d into t d into t into 0 divided by 2 times 80 plus dt। अभी देखो ये जो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन अच्छी इन दी एबव मल्टीप्लिकेशन जतबेला आपण मल्टीप्लाई करिवे ये t into ये t by 2 रो मल्टीप्लिकेशन जतबेला हेबो तो हायर ऑर्डर ओके वी विल गेट हायर ऑर्डर टर्म तो नेग्लेक्टिंग ऑल हायर ऑर्डर टर्म neglecting all higher order term of t रो हायर ऑर्डर टर्म्स गुडा को हम एठी नेग्लेक्ट करिवा ये टाइप यार थ्योरी अछि मींस आकु मु जीरो कंसीडर करि नउछि I will not consider this, I will consider it as a 0 आपरे जतबेला आपण मल्टीप्लिकेशन करिवे ओके आपरे जतबेला आपण मल्टीप्लिकेशन करिवे व्हाट you will have x bar is equal to a into a रो स्क्वायर into 2 कटि जीवो a स्क्वायर into t divided by एठु जतबेला हम कॉमन नबा तो 2 times a plus d into t तो ये t भी कटि जीवो so this will be the formula for your x bar so like this simply by using this particular formula we locate the y axis of the CG a square divided by 2 times a plus d this is the formula clear एबे देखंतु सुनंतु एबे हमको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करियार अछि FR रिजल्टेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन तो रिजल्टेंट फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ FD रो स्क्वायर डायरेक्ट शियर प्लस FT रो स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स FD into FT cos थीटा दिस इज द फार्मूला तो एठी हमको डायरेक्ट शियर ये सब कैलकुलेट करिया पड़ियो व्हाट विल बी द FD डायरेक्ट शियर इज इक्वल टू टोटल फोर्स केते थिला P तो टोटल फोर्स P डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया टोटल फोर्स P डायरेक्ट शियर केते है डायरेक्ट शियर टोटल फोर्स P ओके टोटल फोर्स P डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया sorry direct shear stress first calculate kariya first we will calculate direct shear stress tau d direct shear stress total force P divided by cross section area 2 times 80 plus dt this is your direct shear stress direct shear force FD is equal to let's suppose एबे हम assume करिवा now we are going to assume कि size of weld जो अच्छी okay whatever is the size of weld or the cross section area let's suppose that particular cross section area of the welding हम assume करिवा and let's suppose that particular cross section area of weld is x okay तो डायरेक्ट शियर फोर्स टा केते हेबो
डायरेक्ट शियर स्ट्रेस tau d into cross section area x. I am assume karilu x is the cross section area of weld. So what is this particular value? P divided by 2 times 80 plus dt into x. ये x जो हमें assume करूँ ना by using that particular x value, से x value को ही हमको calculate करिया पड़िबो, and by using that particular value we will calculate the size of weld finally. एबे लिखंतु now write it down. हला कि ओके सुनंतु now so this is the concept of direct shear solved. Okay, now torsional shear torsional shear तो torsional shear stress first calculate करिवा. Let's suppose tau ss torsional shear stress equal to torsion T divided by IP into R. Yes or not? So what is the torsion at CG? T at CG केते हबो? Torsion at CG आपण खाता रे डायग्राम देखंतु मु लेखोची लोड P into L plus A minus L plus A तापर हमें कौन करिया L plus A plus T by 2 minus x bar L plus A कर देली ठीक अछि तापर T by 2 करली minus x bar. Okay, minus x bar तो से लेंथ है. हाँ, this will be your torsion at CG. Like this you will calculate torsion at CG. So ये torque रो वैल्यू आपन को जणा पड़ी गला. How to calculate IP? To calculate IP you need to calculate Ixx of this x Ixx plus Iyy. Ixx Iyy कारो देखंतु ये जो डायग्राम मु बनैली एबे दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये जो ओवरऑल कनेक्शन अछि अबाउट दिस एक्स एक्सिस ये ओवरऑल फिगर रो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दिस वाई एक्सिस ये ओवरऑल फिगर रो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, अब सीधा में केमती कैलकुलेट करियो से जिंस मु सिखेबी. ओके, दैट थिंग आई विल टीच यू सेपरेटली. जदि जणा नाही तो मु सिखेबी. यू हैव टू कैलकुलेट दिस Ixx एंड Iyy. ये जिंस जणा पड़ी गला. R रो वैल्यू आपण ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शंस रो कैलकुलेट करिसंती. R रो वैल्यू, दिस इज द R वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन रेडियल डिस्टेंस व्हिच वी कैन इजीली कैलकुलेट. ये डिस्टेंस हमते जणा कुडा a by 2. Okay, just a minute. This particular distance I know a by 2 here to here. अरे a by 2 ठीक अछि. तापरे ये डिस्टेंस भी मते जणा कुडा एठु एति की दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस केते हो एटा. दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी हाउ मच? This particular distance will be d by 2 minus t by 2. Then by using these two distance vertical and horizontal ये radial distance r I can calculate by using the Pythagoras theorem. तो r रो वैल्यू अपन को जणा पड़ी गला जो कि r एठी यूज हेबो हियर. जस्ट अपन को Ixx Iyy अपन को कैलकुलेट करियार अछि. Okay, what you have to do? You have to calculate Ixx and Iyy. अच्छा, Ixx of the केमती लिखिबा देखंतु बतै दउछि. Ixx
ये सब क्रॉस सेक्शंस गुडा को देखंतु रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस ना these are your rectangular cross sections तो मते कोन लिखवार अछि अबाउट दिस x axis जो CG रु पास करू दिस पर्टिकुलर x axis अबाउट दिस x axis ये सब फिगर रो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया लिखवार अछि तो मु कोन करबी आई हैव टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हियर हाउ मु सबटू फर्स्ट लिखिबी तार निजो x axis अबाउट ओके लेट्स सपोज एरिया 1 रो लिखिबी तो अबाउट इट्स ओन x axis कोन हेबो bd आमे कोन लिखुतलो bdq/12 तो ये केस रे जमती एरिया 1 अछि आरो निजो x axis अबाउट जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया लिखा हेबो सेटा कोन लिखा हेबो a * tq/12 a * tq/12 प्लस आपण ये देखिबे आरो निजो x axis प्लस ओवरऑल कनेक्शन रो x axis केते डिस्टेंस रे अछि तो ये केते डिस्टेंस रे अछि एडा हम कैलकुलेट करिलु d/2 - t/2 ठीक अछि d/2 - d/2 तो r स्क्वायर इनटू एरिया सुनंतु बतौची केमति लिखिबा जंती ix हमको लिखिबार अछि तो फर्स्ट तीनटा एरिया अछि एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 तो एरिया 1 रो आ एरिया 2 रो सेम ही रहइबो तो मु लिखि पारि एमति देखंतु 2 टाइम्स एरिया 1 और एरिया 2 रो लिखि दउची फर्स्ट एरिया 1 और एरिया 2 को मिसै कर लिखिबी जदी तो कोन थिला a * tq/12 इटा जो लिखिले bdq/12 फार्मूला जो थिला हमर bdq/12 बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला आपण लिखिले एरिया 1 और एरिया 2 रो तांकर निजो x axis अबाउट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया सुनंतु तापर हमें कोन लिखिबा एबे देखंतु जो कनेक्शंस रो एक्सेस जो ओवरऑल सीजी रो x axis अछि कोन से एरिया 1 और एरिया 2 रो x axis नो ताको मजरे किछि डिफरेंस अछि व्हाट इज that particular difference I have to calculate से डिफरेंस ता मते जना पडला that particular difference is your d/2 - t/2 तो r स्क्वायर इनटू एरिया एरिया कहते a * t बस एमिति ix आपण लिखिबे एरिया 1 और एरिया 2 रे प्लस हमें कोन लिखिबा ता पई एरिया 3 पई तो एरिया 3 रो x axis आउरी ओवरऑल cg रो x axis कोइंसाइड करूची ओके इट इज कोइंसाइडिंग सो फॉर एरिया 3 bdq/12 देखंतु bdq/12 जो कांसेप्ट यूज करिवे तो ये केस रे हे जो कोन t * dq/12 तो like this you will write ix okay like this you will write ix आई एबे हमें कोन करि परिबा व्हाट वी कैन डू हियर जो हायर ऑर्डर टर्म्स गुडा को आसीबो ताको हमें नेग्लेक्ट कर दवा ओके नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ t ठीक अछि फॉर सिंपल कैलकुलेशन नेग्लेक्ट द हायर ऑर्डर जंते t रे tq अछि याको नेग्लेक्ट कर दवा जीरो को कंसीडर करबानी कैलकुलेशन रे ये भीतर टाइटा नेग्लेक्ट कर दवा आप आपण कैलकुलेट करन ओके नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ t neglecting the higher order terms of t ठीक अछि सबुरे आई वाई वाई भी जति कैलकुलेट करिवे आपण जेमिति एटा आई एक्स एक्स लिखिली सेमिति आपण आई वाई वाई लिखंतु ये जो कैलकुलेशन हला बाय यूजिंग व्हिच थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जेमिति ये आई एक्स एक्स को कैलकुलेट करी लिखिली सेमिति आई वाई वाई को आपण कैलकुलेट करिवे दैट इज ओवरऑल कनेक्शंस रो सीजी रो वाई वाई एक्सिस अबाउट सीधा ताउरे सिंपल फेरे हे जिवो देखंतु कोन पय आई वाई वाई भी लिखि दउची व्हाट विल बी आई वाई वाई तो देखंतु जो एरिया 1 अछि ऊपर वाला और एरिया 2 तांकर वाई वाई एक्सिस ओके आ सीजी रो वाई वाई एक्सिस कॉमन तांको मझे किसी डिस्टेंस नहीं ओके तो 2 टाइम्स आई वाई वाई तांकर आई वाई वाई कोन हेबो
what will be IYY of their AQ, नहीं sorry, T into AQ by 12, T into AQ by 12 इटा है वो सरला I perpendicular axis theorem use हेवनी because area 1 और area 2 रो YY axis is common as a YY axis of the overall connection plus area 3 रो देखंतु area 3 रो YY axis और overall CG रो YY overall connection रो YY axis मझे difference अछि तो सबुठु first area 3 रो about its own YY axis कौन है वो तो it will be d into t cube by 12 area इटा लिखली area 1 and area 2 पाई इटा लिखुची area 3 पाई तो about its own YY axis first लिखली तापरे area 3 रो YY axis और overall connections रो जो CG अछि तार YY axis मझे difference केते रहिला कैलकुलेट करंतु एमती ही a by 2 minus t by 2 a by 2 minus t by 2 sorry a by 2 plus t by 2 ना plus t by 2 rho square into area d into t एमिति neglecting the higher terms कार t रो एठी t रो हायर टर्म्स ना एठी अछि आकु नेग्लेक्ट कर दवा 0 आ भीतर एडा नेग्लेक्ट कर दिया तो 0 सिंपलीफाई करन तो एमती i yy हमें लिखिबा सो लाइक दिस यू विल कैलकुलेट ixx एंड iyy दुईटा को ऐड करन तो ip रो वैल्यू जाना पड़ी गला आफ्टर गेटिंग द ip वैल्यू सुनन तो आफ्टर गेटिंग द ip वैल्यू हम पाखे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस रो वैल्यू जाना r रो वैल्यू हमें कैलकुलेट करि नै छु ओके टॉर्क रो वैल्यू मते जाना ip रो वैल्यू जाना r रो वैल्यू जाना तो torsional shear stress I can easily calculate this particular value so what will be shear force due to torsion ft it will be torsional shear stress tau xs into critical cross section area of the weld which is your x जोटा मैं assume करिथिलु critical cross section area of the weld जोटा मैं assume करिथिलु ठीक अछि getting the point okay so एबे देखंतु तापरे हमें कोन करिवा हमको जाना पड़िगला कोनटा fd और ft then just calculate the fr value this particular fr value will be calculated as theta ro value angle theta ro value अपन को क्वेश्चन दे दिया ही थियो fd square plus ft square plus 2 times ft cos theta like this theta रो value अपन को क्वेश्चन दे दिया ही थियो ओके तारो क्वेश्चन दे दिया ही थियो theta value in this particular question so this particular value fr must be less than what must be less than equal to force carrying capacity at critical section तो cross section area of critical section x into permissible stress x cross section area of critical wait a minute cross section area of critical section into permissible stress is f ultimate divided by root 3 into 1.25 this is the overall concept ये x रो वैल्यू हमको फाइंड आउट करियर अछि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर x वैल्यू ओके आको एबे fr रिजल्टेंट मते जाना पड़ी गला और ये वैल्यू मते जाना अछि सो इक्वेट करी मु x वैल्यू कैलकुलेट करिवे आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर x वैल्यू व्हाट इज दिस पर्टिकुलर x is your cross section area at the critical section okay at the critical section ठीक अछि
So ये x रो value मु calculate करी. After calculating this x value, from here I will calculate the size of weld. From here I will calculate the size of weld. Okay. तो ये टाइप आरो थ्योरी आसुची. सो कंप्लीट करी नेबे भाई भौनी माने लाइक कर दियन तो क्लासेस को कंप्लीट करी नेबे. आमे क्वेश्चन सॉल्व करिवा. ठीक अछि परे करिवा ये कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन सॉल्व. आ परे आर आ गुटे केस अछि से केस मु बतेबी. वेल्डिंग ऊपर जतबे बेंडिंग मोमेंट आसीबो से केस गुटे इंपोर्टेंट केस ता सीटा बुझिला परे आमे ये टॉपिक ऊपर भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसे. ओके एटा तो मु आपन को पूरा डेरिवेशन कर देली कांसेप्ट ता. बट ये लास्ट वाला जो फार्मूला अछि दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज इंपोर्टेंट. जो लास्ट में ये फार्मूला ता मु देई छी दिस पर्टिकुलर फार्मूला इज योर इंपोर्टेंट फार्मूला. आई रो ये सब क्वेश्चंस गुडा को आपन रो सॉल्व होथिबो. ओके तो आमे करिवा नेक्स्ट क्लास रे आमे आगो को डिस्कस करिवा. ठीक अछि वीडियो को आगो पछ करी लेखि नेबे सब जिंस. क्लास भल लागिला कि क्वेश्चन सॉल्विंग जतबेले आमे करिवानी कि गोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोटे दुईटा सॉल्व करिवानी कि सेतबेले आपण बुझी जिवे जिंस गुडा को केमती कैलकुलेट होउची कोन सब बुझी जिवे. न्यूमेरिक वैल्यू गुडा को देखिबा तो आमे बुझी जिवा. एबे जस्ट एज ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट मु इडा आपण को बतै देली. एसी ये रूम रे एसी नहीं रे भाई. ओके गाइस टेक केयर. जय जगन्नाथ भाई भौनी माने. जो भी भाई भौनी मान को क्लास रे ज्वाइन करियार अछि ज्वाइन करिवे. कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करंतु. ये सब क्लासेस एज ए डेमो क्लासेस थिला. कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करी ज्वाइन करिवे. धन्यवाद. प्ले स्टोर रु ऐप टा डाउनलोड करी ज्वाइन करि परिवे क्लास रे कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक्निकल. जय जगन्नाथ भाई भौनी माने. गुड नाइट गाइस. लव यू.